to do. Say along with me, please. Om Agyanatimanindasya Gyana Gyana Shalakya Chaksuan Minitam Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Gyana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Swapadantiham Pandeham Sri Guru Sri Jita Parakamanam Sri Guru Vaishnavanshta Sri Rupam Sagajatam Sagananu Gunitan Tam Tam Saivam Sadvaitam Savadutam Varjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Param Sahagara Lalita Sri Vishakanitam Ska He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Narakanta Namostate Saptakanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Sutadevi Pranamahi Prive Vanchakalpa Karubhaskya Kripasindhyo Bevacha Pati Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Nanotamam Devam Saraswatam Vyasam Atoram Madhurya Nasta Pariyesu Abhadeso Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. So this is very amazing because this here Bhagavat is describing what happened in Treta Yuga. Now things were pretty nice in Treta Yuga in comparison to now in Kali Yuga with McDonald's, KFC, terrorism, rape, and all these things that people, you ask people, I do surveys to young people, I ask them, students, so how do you think, how's society today? Oh, fine. Really? Oh, so you're okay with rape, murder, crime, abortion, unprecedented levels of abortion, and terrorism, and drought, and tsunamis, and the list gets longer and longer. You're okay with these things? Then they stop and think, maybe you have a point. You say, maybe it's not paradise after all, in this Kali Yuga, So this is the age of darkness. So the point is that actually this verse is describing today, not just Treta Yuga. Disturbed it again and again by unnatural occurrences caused by the followers of Hiranyakashipu. All right, so we don't have a Maha Hiranyakashipu today, fortunately. But we have thousands and thousands of mini Hiranyakashipus on the planet, quite capable and empowered by Kali to wreak havoc. Isn't it? We're experiencing so much crooked politicians all over the world, not just India. I mean, bribery is very easy in India. It's a little more sophisticated in the United States, You give campaign contributions to the United States. Corruption is going on all over the world. Prabhupada was the Shinga Guru on this subject matter. Kick on the head, He was not going to spare such corruption and deviation from pure Dharma. Well, that's where we are today also. Not receiving the results of the jugna, the demigods also became disturbed. So the demigods are disturbed by what's going on this planet today. Activities of demons. A few million Hindus doing a little Kali Puja, Shiva Puja, Ganesh Puja. That's not enough to counteract the disaster of this age. Because in this age, only the holy name, Yuga Dharma, can do it. Everyone, please. Harinama, Harinama, Harinama eva kevala, Kalua nasteva, 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 gatiranyata. Again, please, with 3 times more enthusiasm. Harinama, Harinama, Harinama eva kevala,
Kalua Nasteva, 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 Gatiranyat. One more time. Harinama, Harinama, Nama Eva Kevala, Kalua Nasteva, 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 Gatiranyatam. There's no other way. Nasteva, Nasteva, Nasteva. In Vedic culture, you want to emphasize something, you say it 3 times. So Mahaprabhu said, Nasteva, Nasteva, Nasteva. There's no other way, no other way, no other way. Other efforts will be half-baked, or they'll be partial, or a drop in the bucket. Can't do very much. Only the Yoga Dharma can save the situation. So, the demigods are disturbed. But this Krishna consciousness movement introduced by Srila Prabhupada is saving the planet. Haribol. Prabhupada has written in the, I believe it's in Chaitanya Charitamrita, this Krishna consciousness movement will go down in history of saving the world in its hour of darkness. Now, if anybody thinks that the world is not in its hour of darkness right now, please, have your head examined. We are already in the hour of darkness, with at any moment wars breaking out all over the world, so much homelessness. Just like people think the United States is a paradise, there are at least more than 1 million homeless people in the United States. In India, they can't imagine such a thing. They think the U.S. is a heavenly planet. And when you take out a visa application to go to the United States, and Indian or foreigners take out a visa application to go to the United States, right at the top of the visa application, it says, at the top of the application, it says in bold letterings, we presume that you're going to try to stay. It's a fact. That's what the visa application says. Now, if everyone wants to go to the heavenly planet called the United States, they don't know how much homelessness there's. There are people in the United States that go to sleep at night without eating and so forth. These things are going on. So, actually, I asked Srila Prabhupada personally, I said, Srila Prabhupada, the United States is just like a heavenly planet. You go to supermarkets and there's everything is there. In the U.S., you can buy imported jams and jellies, real fruit, and packaged goods, packaged cereals, canned goods, and very fresh produce from various places around the world. It's like a paradise except for the meat department. So I asked Srila Prabhupada, it is so much like a heavenly planet, so much opulence and all that, but there's no jugna to support it. Of course, I was thinking of the Bhagavad Gita, Jagna Vaya Vishnu, that, Anad Bhavanti Bhutani. I was thinking of that shloka, grains are produced by Jagna. I didn't spell it out. I didn't have to. Obviously, I'm dealing with Prabhupada. I didn't have to spell it out. Anad Bhavanti Bhutani. I didn't have to say the verse. He knew perfectly well what I was talking about. So I said, there's all this prosperity, but there's nothing to sustain it because this prosperity is sustained by Jagna, and there's no Jagna. He said, very ominously, he said, it will not last. Very soon it will be finished. So what we see today in the modern world is the dying throes of modern civilization. Like if you kill an animal, it shakes for a while before it finally dies. It's rather gruesome. So that's where we are as a so-called civilization right now, in the the death throes, and things are getting worse and worse. Economic collapses. The euro almost collapsed. They put it together with sellotape. Do you know why? Do you know why the goddess of fortune allows the world economy to keep limping along? Do you know why? Because of this Sankirtan movement, this Krishna consciousness movement.
this book distribution has to go on. If we have no vehicles and no money, well, it will hamper our preaching. We're not so expert to go out barefoot in the streets with what's left of the books and so forth. We want to print more and more books. We want to distribute. We want to do all these things. Preaching, television, media now. We see how ISKCON is using the media. So Krishna, when Goddess of Fortune says, these people are too sinful, I want to collapse the economy, Krishna says, all right, well, yes, you're right. Yes, I know, but just keep it going a little longer because look, see my devotees, look at all the wonderful things they're doing, like the 50th anniversary celebration in Calcutta, historical event, you know, and whole of India watching on the television, the world taking note of these things. So, Krishna keeps it together with sellotape. It is Krishna who restored the euro, not the bankers. Not a blade of grass moves without the sanction of the Supreme Lord. If he wanted it to collapse, it would collapse overnight. But no, with sellotape, they managed to run here and there and do some fancy dancing and paste it back together again so that the euro is still going in spite of so many bankrupt nations. How do you call this progress? So many nations in Europe, the United States is also bankrupt. But it's you know, blind faith thing. People still have faith in the U.S. dollar. Wherever I go traveling, they want dollars if they can get it. You know, it's a mythology. You know, they worship the dollar. You know, but anyways, the point is that all this is going to come to an end. So when Prabhupada said to me, "Very soon it will be finished," but I was so shaken up by his statement, I didn't have the presence of mind to say, but Srila Prabhupada, what does very soon mean? Well, I asked the question, 35 years ago or something like that. But we see the symptoms of the world today of deterioration and collapse. The symptoms are there. The 16th chapter of the Bhagavad Gita makes it very clear. Just like Hiranyakasipu and his men were doing here, the demons are engaged in horrible, unbeneficial works meant to destroy the world. They want to get their sense gratification out of it. They destroy the world in order to bring that about. So they won't stop at anything. Murder, drug dealing. You know, there was one big international banker was financing drug smuggling. Well, he got caught. Did he get punished? No. Did he get put in jail? No. But if somebody smokes one, reefer, they can get, 10 years in jail or something like that. One story about a veteran, a war veteran, and then he got like 10 years in jail for one reefer or something. This is Kali Yuga. Justice will be determined by how much money you have. You see? This is proven time and again. So, this disturbance is going on, and this Krishna consciousness movement is the only hope. There's no other hope because everything is going down. Now, the challenge that we face is to clean our own house. We have to clean our own house. Because we're chanting Hare Krishna, because we stick our hand into a bead bag, and sincere devotees chant 16 rounds, and because we are trying to follow Srila Prabhupada, those that are sincere. So, yet at the same time, Krishna consciousness is not automatic. It's not mechanical. It's what you do in the name of Krishna. It's what you do in the name of Srila Prabhupada. That's what counts. Not what's on paper. So there's two things, Gyan, knowledge, and Vigyan. Generally we have more emphasis on Gyan than on Vigyan. Vigyan is the practical application. We have to execute the practical application of Srila Prabhupada's teachings. The teachings of the Shastra.
We have to live by it. We have to breathe it. We have to walk it. Now they say talk is cheap. So talking it is not enough. It's breathing it, living by it. How we behave with others. How are we how are we treating others, especially other devotees? It does not matter how many years you've been in this movement. That is not how you measure advancement in Krishna consciousness. Supposing you've been devotee for 30 years. Jai. Okay, fine. You got some nishta, some steadiness. But if your heart is hard, it's a very low-grade nishta, isn't it? Yes? No? Maybe nishta of the lowest quality. If the heart, Srila Rupa Goswami says, steel-framed. We see many 30-year devotees with steel-framed heart, lacking compassion, lacking mercy, lacking tolerance after 30 years of practicing Krishna consciousness. Lack of humility, puffed up, Dr. Frog. This is going on. And impersonalism. Senior, I don't know what it's like in the ladies' sector, but amongst the men, I find ice cold impersonalism even amongst senior devotees. You know, I joined the movement in 1967, took initiation in 1968. Now I'm a sannyasi. Of course, these things are external, that's fine. But when I walk around, many of my god brothers that I have known for decades don't even say Hari Bol. Don't even go like this with a mini pranams. Ice cold. So where's the advancement? Real advancement in Krishna consciousness means you become soft-hearted. Is it not? Yes, no? If you're hard-hearted, if you can't even go like this when you see a sannyasi, the Shastra says that you should bow down, offer obeisances when you see a sannyasi, or you have to fast. I'm not making that up. That's what the Shastra says. But it's not that a sannyasi walks around expecting all the time everybody's going to hit the deck and Dhanava pranams. And it is not for the self-aggrandizement of the sannyasi. It is not for the false ego of the sannyasi. It is culture. It is genuine. It is real civilization. Then we have to do a reality check. Where do you want to be 30 years from now in your Krishna consciousness? Do you want to be hard-hearted? Do you want to be externally successful? Do you want to just climb the corporate ladder and get a pat on the head from big men? Is that what you want? Or do you actually want to go to Braj? If you just want to climb the corporate ladder, you can do that. You can distinguish yourself in your service. You can work very hard on the excuse that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, work now, samadhi later. Now that statement by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, of course that's very important, but that's because he didn't want his men to be lazy. Sit back, eat lots of prasadam. He didn't like it when his sannyasis were overweight, you know. He didn't want his men to be lazy. Just eat lots of prasadam. Let's do a little bhajan, say a few shlokas, and eat some more prasadam and take a nap. He didn't want that, you know. So he said, work now, samadhi later, to prevent laziness. But is that all in all? It has been misinterpreted. That famous statement by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has been misinterpreted. So the result is, if you interpret that statement by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, then you neglect inner development. It's something that Ayendra Prabhu constantly, non-stop stressed. Inner development in Krishna consciousness. If you don't develop the inner nature, if you don't become soft-hearted, you miss the whole point. We see devotees are sometimes cruel. See a dog, kick it. Is that Krishna consciousness? Is that what, you know?
Gorkishore Das Babaji, he was taking prasad, and then there was a female dog moved in somewhere near his hut. So 5 puppies came to his hut. They were going to eat prasad off his plate, you know. And so his servant freaked out. And you know, and he was freaking out, you know. So the Gorkishore Das Babaji says, don't do that. They're down basis. You do like that, I will fast. Oh. Oh, so could we take example from materialistic Prakriti Bhakta? You can be a 30-year devotee and still be a Prakriti Bhakta. Materialistic. If your heart has not softened. If you can pass another senior Vaishnava and not even say Hari Bol, then your Granti is very strong. Granti means the knock in the heart is very strong. Impersonalism. In so many ways, our movement is actually infected by impersonalism. Not exactly Mayavadi philosophy, just coldness in dealings between certain levels of devotees. You know, this must be measured against what Shastra says. You know, we're supposed to follow what the Shastra says. We're supposed to follow. If you study, I would request all of you to study the life of the Vaishnava Acharyas, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya. These biographies available. I have them. I have the complete set of biography in my computer. If anybody wants to bring a pen drive, I can give it to you. Biographies of the Vaishnava saints. And study their dealings. Not only our problem, but previous Acharyas, Sad Goswamis. What is Vaishnava behavior? We're supposed to know. We have to know. The Vigyan, the practical application, we have to know how to apply these teachings. Otherwise, what will happen is, you know, I was watching at the ILS, ISKCON Leadership Sangha, I was watching, they were showing the films of devotees going out on the streets and introducing people to the Mahamantra for the first time, part of the 50th anniversary celebration. So they were getting people just chant Hare Krishna, happy peace, you know, and people laughing and smiling and ecstatic, Hare Krishna, ecstatic, happy, you know, chant to be happy. They're brand new to Krishna consciousness. They chant and they're happy. You get it? They're brand new to Krishna consciousness. But sometimes, you know, what is it? After 30 years, chant and be happy. Chant and be happy, Prabhu. You know, is it like that? Is that advancement in Krishna consciousness? You see? You will get what you want because Krishna consciousness movement, the Shastra, and teaching is the Prabhupada, the Shastra is a desire tree. You'll get what you want out of it. You want to become a big man or a big woman, you can do that. But what's going on internally? If we neglect the internal development, then we can be going mechanically. And I can have big position. But what is the merit if I'm hard-hearted? I missed the point. We have to take example from the Acharyas. Read it, please. If you want, give me your pen drive. I have it right here in my computer. Lives of Vaishnava Acharyas. And what are their sweet and loving relationships? Always placing the topmost value on other devotees without consideration of their rank. You understand? Yes? Without consideration of their position. Is he a big devotee? Oh, you know. Is he famous? Or is he not famous? The real Vaishnavas don't make those considerations. But why shall we make those considerations? Those considerations are Prakriti Bhakta. I don't care if you've been chanting for 30 years. Prakriti Bhakta. Kanista Adhikari. Or actually what we have in our movement is generally a mixture between
Kanista and Madhyam. Because a Kanista can't do what's done in this movement, but we have many who are a mixture between Kanista and Madhyam, who are preaching and doing all kinds of things. But our mixture between, not 100% Madhyam. You might think, well, if they're preaching, they must be Madhyam. Yes, but are they 100% Madhyam? I came across a very shocking statement by Srila Prabhupada. It shook me up, actually. Prabhupada said, anyone who is attached to honor is a Kanista Adhikari. You know, the first thing that happened was I said, oh my God. I'm always thinking that I'm a Madhyam Adhikari of some sort, maybe not very high level Madhyam, but I'm always thinking I'm a Madhyam Adhikari. I can preach, I can increase the faith in the hearts of devotees in 1 hour and new men and all that, and I can do many things being by mercy of Prabhupada, but can I say that I'm free from the desire, honor? No. You understand? Yes, no. So then I myself am holding up the mirror, because in the Bhagavad Gita Krishna says that the introspective sage, so we have to hold up the mirror and look within ourselves. Where am I spiritually? Now we live in a world of demons, as is clearly stated here, and these same things are still going on in Kali Yuga and getting worse and worse. How can we reform the world unless we actually have compassion, tolerance, love? What will happen to these thousands of innocent people that we're bringing into Krishna consciousness? They become ecstatic. They love chanting Hare Krishna. They get into the movement, and then they find out that some leaders are hard-hearted. What's that going to do to their faith? They find out that some leaders are intolerant. What's that going to do to their faith? Because everyone in this movement, whether they're so-called big devotees, whether they are officially acharya, or whether they are just passing out books, in any case, every single devotee must be a mini acharya. Why? Because we're representing Srila Prabhupada and Krishna. People cannot see Krishna. He is God. He's unapproachable. The tip of his toenails cannot be approached even by yogis. But Prabhupada is making available. So representing Krishna, all they know about Krishna is the devotee. That's all I know. Whatever opinion they develop about Krishna will depend on the quality of presentation made by the first devotee that they talk to, isn't it? Everyone has this experience. If you enliven them, inspire them, and get them going in chanting and get them going in reading Prabhupada's books, then that's called real preaching. Then they get favorable impression of Krishna consciousness and they carry on, want more association like that, you know. So our duty is non-stop always representing Krishna, mini acharya, never mind position. That's not just if you sit on Vyasasan, you're acharya. Not like that, you know. Not if you just have special position. That is very good. But everyone must be mini acharya, at least small acharya. By our example, we have precept. We have to teach Krishna consciousness by our example. Then there will be the ultimate Hare Krishna explosion. When we are, I mean, the movement is exploding, expanding, but we want quality as well as quantity, isn't it? Yes? And we have to be very careful about institutionalism because, you know, there's pratista, you know, pratista means position, attachment, and that can strengthen the granthi or the knot in the heart, you know, and can cause one to chant 10th offense. If you are attached to position, honor, and power and whatever, then that is a 10th offense. Certainly. Then there will be trouble, as we see that many of my God brothers who were very, very dedicated, but because of the 10th offense, then in turn the Hatimata, the great mad elephant offense against Vaishnavas. And so of my greatest God brothers that had the most impressive results
externally. Millions of books distributed, thousands of devotees made, opened so many temples. Those that fell down, why? Was Krishna unappreciative? Should we conclude that Krishna didn't appreciate their hard work and glorious accomplishments? No. Hatimata. In each and every case, Hatimata, Vaishnava Parad. Puffed up, proud, pratista. It's a killer. So, we have to be careful. We have to think about that shloka in Bhagavad Gita, the introspection stage. We have to hold up the mirror and look inside her, and we have to give ourselves an honest report card. Just like I'll conclude by reading this, one of my favorite shlokas from the Bhagavatam. Kumintam Sakavam Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyanta Sto Hyabradani Vidonati Saritatam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma in everyone's heart, and is the benefactor of the truthful devotee. And I think, oh, I don't tell lies. No, it's deeper than that, but we don't have time to discuss. The truthful devotee cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages. That means a little bit of ruchi, at least, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. So we have to be truthful. We have to hold up the mirror. What is my progress? We have to give ourselves our own progress report. You see, not just wait until somebody else said it's not in the West, just wait until a superior corrects us. We ourselves have to do constant self-evaluation. Then we can progress and the movement can progress. Thank you very much. Jagaguru Sri Prabhupada ki jai. Kanantara Shima Bhagdam ki jai. Sri Panchatattva ki jai. Sri Radha Madhava Ashtasaki ki jai. Gopramanandi. Hari Hari Bol. His Holiness Bhakti Madhurya Govind Swami Maharaj ki jai. Bhakti Madhurya Govind Swami Tirubhati Mahotsav की जय। तो अभी दो वीडियोस हैं महाराज के, एक उनके लाइफ के ऊपर और एक उनके तिरुभाव के समय पे, जहाँ पंजाबी बाग से हम उनको वृंदावन में समाधि देने के लिए गए थे, और उसके बाद हम संक्षिप्त महाराज का गुणगान और उसके बाद पुष्पांजलि। हरे कृष्ण। जे अनिलो प्रेम दना करुणा प्राचु जे अनिलो प्रेम दना Karuna Prachu Heno Prabhu Kota Gila Acharjataku Heno Prabhu Swarup Rupa Kaha Sonota Kahamora Swarup Rupa Kaha Sonota Kahadasa Raghunata Patita Pava Juga Kaha Kavira Kahamora Juga Kaha Kavira
Natara Ekakale Kota Gela Ekakale Kota Gela Gaura Natara Ekakale Kota Gela Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Pashaneku Tibo Mata Anale Pasiva Pashaneku Tibo Mata Anale Pasiva Gauranga Gunera Nidhi Kota Gele Pavo Gauranga Gunera Nidhi Kota Gele Pavo Seshabasang Giro Sange Jai Koilo Bila Seshabasang Giro Sange Sangana Paya Kande Naru Tomoda Sangana Paya Kande Naru Tomoda Sangana Paya Kande Naru Tomoda Jayanilo prema donna Koruna pratu तो एक अभी हम ठाकुर भक्ति नोट के द्वारा भजन गाने वाले हैं। Samsaradava Nalalida Loka
चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद सदन चित्तन हरि भक्त संग चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद सदन चित्तन हरि भक्त संग कृतेव तृप्तिं भजत सदेवा वन्दे मिनट है तो मैंने सोचा था कि एक भगवान के नाम की हरे कृष्णा नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज हम भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज का, गोस्वामी महाराज का चतुर्थ तिरुभाव महोत्सव आज मना रहे हैं। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आपको किसी को याद है वो क्या डेट थी? 14 नवंबर, प्रभुपाद जी का जिस दिन, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार प्रभुपाद जी का जिस दिन तिरुभाव हुआ था। तो महाराज का संक्षेप में मैं कुछ जो गुण हैं वो चर्चा करके और महाराज के कुछ रिमेम्बरेंसेस और उनके इंस्ट्रक्शंस। तो महाराज का जन्म 1945 में हुआ था। 1967 में वो इस्कॉन के भक्तों से मिले थे और 1968 के अंदर आई थिंक इट वाज बर्कली जहाँ पे उनका इनिशिएशन हुआ और बर्कली टेम्पल उन्होंने ज्वाइन किया कैलिफोर्निया के अंदर। और महाराज ने वहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके, बर्कली यूनिवर्सिटी में जाके महाराज प्रचार किया करते थे। और वहीं अमेरिका के अंदर प्रभुपाद जी के प्रथम 100 शिष्यों में से, इनिशिएटेड डिसाइपल्स में से एक थे महाराज। और उनको दीक्षा के समय क्या नाम मिला था? माखन लाल दास, तो माखन लाल प्रभु। और महाराज बताते थे हमको कि जब वो न्यू भक्ता प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो रोज 5 क्लासें हुआ करती थी और उनको सब श्लोका याद कराए जाते थे, ईशोपनिषद मंत्रास वगैरह। और समहाउ वो 1970 के दशक में उन्होंने ये सब किताबें पढ़ी होंगी, याद होंगी। और आज भी महाराज, मतलब आज से 20 मतलब 70s और 2015 40-45 साल बाद भी महाराज बोलते थे ये बुक लेके आओ, ये श्लोक निकाल के लेके आओ। तो महाराज हैड वेरी गुड रिमेम्बरेंस ऑफ प्रभुपाद बुक्स का फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद में महाराज ने मंदिर में सेवा की। महाराज, जितना मुझे ध्यान है, उस मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने सेवा किया। और उसके बाद में महाराज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। और उसके बाद का तो मुझे ज़्यादा जीवन काल नहीं पता। उनकी जो डॉटर थी वनमालिनी माता जी बहुत अच्छी भक्त हैं, क्योंकि मेरा बाद में महाराज के तिरुभाव के बाद बहुत लंबे समय तक संपर्क रहा था उनके साथ में। और महाराज के जो भाई हैं उनका नाम क्या था? नर नारायण प्रभु। अभी लगभग 2-2.5 साल पहले उनका भी तिरुभाव हो गया, बड़े भाई थे उनके। और नर नारायण प्रभु जो है, ये जो रथ यात्रा हुई थी इस्कॉन की पहली, तो उसके अंदर पहली नहीं, मतलब रथ यात्राएं होती थी, उसमें रथ बनाने का उनकी सेवा होती थी। जैसे जयानंद प्रभु किया करते थे, उनको भी विश्वकर्मा बोला जाता था कई बार ऑफ इस्कॉन, उनके भाई को भी। वो भी बहुत अच्छे भक्त हैं। आई मीन अभी तो थे, मतलब उस सेंस में कि प्रकट देह में वो भी नहीं है नर नारायण प्रभु। और लगभग बाद में महाराज ने वानप्रस्थ लिया और फिर भारत में आए। फिर इंडिया को महाराज ने अपना हेडक्वार्टर्स बनाया और 2005 के अंदर महाराज पंजाबी बाग में शिफ्ट हुए। रुक्मिणी कश्यप वगैरह से मिले थे वृंदावन के अंदर। और फिर बाद में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कहने पे महाराज ने अपना यहाँ पे बेस बनाया। और महाराज बहुत, उस समय माखनलाल प्रभु थे तो बड़े खुश रहते थे इस मंदिर के अंदर। महाराज बहुत भक्तों को प्रेरित किया करते थे। और खासकर जब कृष्ण बलराम की स्थापना हुई तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और बोला, सी दिस इज वृंदावन, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन, हमेशा बोलते थे। कृष्ण बलराम इज देयर, जगन्नाथ इज देयर, गौर राधा कृष्ण राधिका रमन इज देयर। और महाराज के बहुत योगदान है। एक वरिष्ठ भक्त के, और विशेषकर जो प्रभुपाद जी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, लॉयल हो, तो महाराज का बड़ा योगदान है। हमारे में से कई सारे भक्तों के जीवन के अंदर कई प्रकार के योगदान है। और जब मैं टेम्पल ज्वाइन किया था 2007 के अंदर, तो मंदिर तो जगह थी नहीं, रूम भी नहीं थे। तो महाराज, हालांकि प्रॉपर डिसाइपल होते हुए भी, हम उस रूम के, एक बड़ा रूम है यहाँ पे, तो उसमें हम 1 2 3 4 भक्त और रहते थे महाराज के साथ। मैं था, नित्यधाम प्रभु, तपोमय प्रभु और ब्रजनाथ प्रभु। मैं भी आया था तो फिर मैं भी उसी रूम में, और महाराज हमारे साथ ही वही टॉयलेट शेयर करते थे, वहीं हम सोते थे और वहीं पर ही खाते भी थे और एटसेट्रा। तो उस एज के अंदर, मतलब लगभग कितना एज हो गया होगा उस समय, 2007 में 62 के आसपास, उस एज में भी महाराज बिल्कुल नए भक्तों के साथ में रहने के लिए ही हैड नो प्रॉब्लम, वे सो एडजस्टेबल। जब ये गृहस्थ आश्रम से आए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे एक समय पे, लेकिन इस एज के अंदर भी ही वाज सो एडजस्टेबल। बाद में थोड़ा एज और हेल्थ के कारण देन वी शिफ्टेड हिम टू द अदर रूम, छोटे रूम के अंदर।
तो मैं 2 साल महाराज के साथ में उस छोटे रूम और बड़े रूम के अंदर महाराज के साथ में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और महाराज हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे बहुत। और हम पता नहीं, मेरा ऐसा परसेप्शन था कि महाराज अपना अमेरिका के शेड्यूल को भूल नहीं पाए, तो इसीलिए अमेरिका में नाइट होती है, डे होता है, तो महाराज रात को बहुत जल्दी उठ जाते थे और दिन में उनको रेस्ट करना पड़ता था, बिकॉज यूज्ड टू गेट टायर्ड। और महाराज का प्रचार में बड़ा वो था, बल था, बड़े फायर्ड अप प्रीचर थे। और मेरा भी बड़ा सौभाग्य था कि जितने भी बेसिस में यूथ प्रोजेक्ट्स में मैं सेवा करता था, लगभग सब जगह महाराज ने ट्रैवल किया। IIT रुड़की में, NIT प्रयागराज में, वहीं भक्तों के साथ रहते थे। इधर द्वारका के अंदर NSIT कॉलेज में, मंदिर में जो क्लासेस होती थी, MAIT कॉलेज के अंदर, जितने हमारे पुराने भक्त होंगे सबको अनुभव होगा महाराज की सेवा करने का रिस्पेक्टिव बेसिस के अंदर। और महाराज के सामने आप घड़ी रख दो, कुछ भी रख दो, अगर महाराज एक बारी फॉर्म में आ जाते थे तो फिर बस 2 घंटे 3 घंटे और जो है कृष्ण कथा इंस्ट्रक्शन देते रहते थे। लेकिन एक बात बड़ी खास थी जो मैंने महाराज के उन दिनों में पॉइंट आउट किया, महाराज हमेशा क्लासेस के अंदर किसी ना किसी को ऐसे पकड़ लिया करते थे, क्वेश्चन रिस्पॉन्स पूछा करते थे और बाद में मुझे आके बोला करते थे, सी दिस बॉय, आई गॉट हिम, ही विल बी अ बिग लीडर और ही विल बी अ बिग प्रीचर, ही इज अ नाइस डिवोटी, या ही इज स्ट्रगलिंग, यू शुड हेल्प हिम, यू शुड गिव हिम दिस सर्विस। और 2000 तो ये मेरा उनके साथ यूथ प्रीचिंग का अनुभव था। और उसके बाद में 2007 में ही मैं भी जब बिल्कुल न्यू था तो टेंपल ज्वाइन किया था, तो महाराज हमको, मैं था और 2-3 भक्त, ब्रजनाथ प्रभु थे, मैं था, हमें खुद भी महाराज गमछे के अंदर, हम भी गमछे के अंदर छत पे जाते थे और यहाँ तुलसी की सेवा किया करते थे। महाराज को तुलसी से, वृंदा देवी से बहुत प्रेम था और महाराज कहते थे अगर तुलसी महारानी की हेल्थ ठीक रहेगी टेंपल के अंदर तो मंदिर के सारे भक्तों की, फिर कांग्रीगेशन के भी, मंदिर के निवासी भक्तों के भी, सब आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो महाराज पर्सनली खुद, मतलब मुझे याद है वो ट्रांसप्लांटेशन सिखाना, मंजरी निकालना, और खुद ऊपर जाया करते थे। और उस समय तो लिफ्ट भी नहीं थी हमारे पास में, वो बाद में लगी थी लिफ्ट, तो इवन वो वाली भी जो दूसरी कमर्शियल लिफ्ट थी, तो वहाँ सीढ़ी पे चढ़ के जाते थे और 2 घंटा शाम को 4 से 6 बजे तक जो है हमें सेवा किया करते थे कई दिन तक। और जब अच्छी तुलसी जलती थी महाराज बहुत खुश होते थे, और अगर कोई तुलसी जल जाती थी या सूख जाती थी या हेल्थ ठीक नहीं होती थी, खासकर तुलसी आरती में अगर मॉर्निंग में तुलसी यहाँ दिख गई महाराज को तो फिर हमारी पूरी जपा के दौरान क्लास लग जाती थी, है ना। तो पहले हमें बोलेंगे, फिर तुलसी के बारे में बताएंगे, एंड देन फिर जब प्रभुपाद भवन में तुलसी गार्डन बनाया गया, ही वॉज सो हैप्पी। महाराज उसमें तो 3-4 सीढ़ी, 3 फ्लोर चढ़ के, वहाँ तो लिफ्ट है ही नहीं, अभी भी नहीं है, तो उस पर जाते थे। फिर बाद में यहाँ शिफ्ट किया गया तुलसी गार्डन। और तो ये महाराज का एक बहुत बड़ा तुलसी के विषय में जो था वो बहुत बड़ा योगदान था और टेंपल के डिवोटीज को। और आपको याद होगा जो पुराने गृहस्थ भक्त हैं, महाराज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया करते थे, किसी को याद है? वैष्णव ड्रेस के लिए। अगर उनको कोई दीक्षित भक्त मिल गया और कर्मी ड्रेस के अंदर है तो महाराज उसको वहीं पकड़ के उसकी क्लास लगा देते आधा घंटा। यू गॉट इनिशिएटेड, हाउ कैन यू कम टू टेंपल लाइक दिस, लाइक दैट। तो आई नो अंडरस्टैंड यू आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, बट यू हैव व्हीकल, एक बैग के अंदर आप धोती कुर्ता रखो और यहाँ आके चेंज कर लो। और हमको डांटते थे, कह रहे मंदिर में है वो चेंजिंग रूम, आप एक चेंजिंग रूम हो ताकि भक्त लोग जो आ सके वो ड्रेस चेंज कर सके यहाँ पे। फिर हमने एक बनाया था, बाद में कुछ समय यूज हुआ, फिर किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, बट वो इतने कंसर्न रहते थे। और खासकर बच्चे अगर उल्टी सीधी है, मिक्की माउस बोलते थे महाराज, मिक्की माउस टी शर्ट एटसेट्रा अगर पहन के आ जाते थे तो महाराज कहते थे व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज दिस, यू नो, लाइक दैट। और फिर महाराज कैसे वो अपनी बेटी को कृष्णा बुक पढ़ाया करते थे, कई बार हमको बताते थे हाउ यू यूज्ड टू एजुकेट हर, हाउ यू शुड ड्रेस हर, गोपी ड्रेस एटसेट्रा, एंड दैट्स हाउ। फिर बोलते थे बच्चे कैसे भक्त बन सकते हैं। बाद में जब संन्यास हुआ महाराज का तो फिर महाराज तो ट्रैवल करने लगे, पहले इंडिया के अंदर, फिर ओवरसीज, नेपाल का विशेष में यहाँ पे कहाँ का, नेपाल, श्रीलंका और कहाँ का, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बाली, मलेशिया और अफ्रीका भी गए थे ना, अफ्रीका एंड मैनी अदर प्लेसेस ट्रैवल्ड। और मुझे भी बोलते थे और हमारे कई भक्तों को बोलते थे नेक्स्ट टाइम व्हेन आई ट्रैवल टू मलेशिया यू शुड कम विद मी,
से नो नो महाराज टेक प्रेमांजना विद यू। तो इस प्रकार से। और तो ऐसे बहुत सारे फनी इंटरेक्शन थे महाराज के साथ में, बहुत सारे मेमोरेबल इंटरेक्शंस थे। कार्तिक के दौरान जनरली महाराज वृंदावन में रहते थे। महाराज के पास उनके डीटीज थे, स्टफीज, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, नील माधव, और मंदिर में पता नहीं कितने लोग अपने अपने विग्रह छोड़ के चले जाते थे महाराज के पास में। इतने अगर सारे विग्रह हमने बांटे नहीं होते लोगों को तो पूरा एक कमरा और विग्रह का होता आज ना। तो उनमें से 2 विग्रह तो मेरे मदर के पास ही हैं, और ऐसे ऐसे करके तो हमने बहुत लिमिटेड विग्रह रखे, नहीं तो पूरा दिन 2 पुजारी, मतलब जितने ऑल्टर में डीटी उससे ज्यादा डीटीज तो महाराज के पास होते हैं। और गिरिदास थे महाराज के पास। लेकिन महाराज की डीटी वर्शिप की बड़ी खास बात थी, उनके ये शालिग्राम हमारे पास में है, आई थिंक 15 शालिग्राम है हमारे पास में। तो फिर अब रोहिणी मंदिर ओपन हुआ तो 3 वहां पे भी है उनके द्वारा वर्शिप शालिग्राम शिला। तो महाराज शालिग्राम शिला पूजा किए बिना कभी भी खाते पीते नहीं थे, एज के बाद भी, इतने एज के बाद। और अगर कभी पूजा के दौरान उनको टॉयलेट जाना पड़ा यूरिन पास करने के लिए भी, तो महाराज दोबारा पूरा स्नान करके आया करते थे, है ना। ही वाज इवन एट द एज, सो इन सर्टेन थिंग्स ही वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट बेसिकली। और हमें महाराज कहते थे, मुरली हम सब ब्रह्मचारी को मतलब कह रहे, हैव यू एवर सीन एनी प्रॉपर डिसाइपल इन हुज रूम यू कैन गो लाइक दिस, है ना। हम तो महाराज के रूम, उस समय महाराज के रूम में एसी था, कभी किसी को गर्मी लगती थी जाके वहां बैठ जाते थे, सो जाते थे हम लोग तो। और महाराज खुश भी होते थे, यूज्ड टू वेलकम। एंड कई भक्तों का रूटीन था, शाम को या रात को किसी को भूख लगेगी तो हमें पता था किधर जाना है। एंड महाराज भी, सो what do you want? Maharaj, we are feeling hungry. Oh yes, take this prasadam, keep this for me and you can take this rest. तो उस प्रकार से so we had a lot of, मतलब जब भी मजाक करना होता था। और महाराज की एक और खास बात थी, भक्तों की अनेक खास बातों में से, कि जब कोई भक्त अच्छा क्लास देते थे या कीर्तन लीड करते थे, महाराज बहुत प्रसन्न होते थे। और उल्टा सीधा कीर्तन में लीड करते थे तो वहीं पर ही उसको डंडा लेके लिटरली कहते थे नरसिम्हा रूप। तो उसको क्या, अगर कोई मंगल आरती की मेलोडी गड़बड़ करेगा या कुछ और कीर्तन के बारे में, कीर्तन स्टैंडर्ड्स, मुझे याद है 1-2-3 बार तो मेरे को याद है, कम से कम मैं क्लास देना था और पता नहीं क्या हुआ, महाराज अपना आराम से बैठ गए, फिर किसी को बोले ट्रांसलेट करो। और क्लास देने के बाद मेरे को सीधा व्यासासन पे आके सीधा बोले, कह रहे यू गिव सच अ नाइस क्लास, वेरी पावरफुल क्लास, यू शुड बिकम पावरफुल टीचर। और फिर अपना डंडा दे दिया, वन डे यू शुड टेक डंडा, ना। हम ऐसे कितने ही भक्तों को अपना डंडा पकड़ा के महाराज जो है बोलते थे यू शुड टेक संन्यास। और गोपाल कृष्ण महाराज को महाराज बहुत लाइक करते थे, ग्लोरीफाई करते थे, कह रहे ही इज आचार्य, ही इज फुल्ली एम्पावर्ड बाय श्रील प्रभुपाद, यू शुड सिंपली फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। और हमेशा उनका उदाहरण दिया करते थे। तो मुझे भी जब महाराज को कभी डाइट, क्योंकि महाराज को अमेरिकन मतलब बॉडी थे, तो उनको अमेरिकन के जो आइटम को अच्छे लगते थे, स्वाभाविक है, बचपन से मतलब जिसमें अपब्रिंगिंग हुए हैं, वो उनके हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए अच्छे नहीं थे। अब अगर हम उनको रोकते थे तो महाराज थोड़ा गुस्सा कर जाते थे। तो फिर तो महाराज से वैसे तो मंदिर में सभी डरते थे, बस एक शायद मैं होऊंगा जिनसे महाराज डरते थे। तो मेरे को बोला ये कवि श्रेष्ठ पुणे, महाराज ने मुझे बोला, सी दिस कवि श्रेष्ठ, व्हाट इज ही डूइंग, यू नो, he stops me from eating महाप्रसाद। तो he told me like this and he became angry। तो मैंने सुन लिया सारी बात। फिर मैंने कवि श्रेष्ठ को बोला बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे ही रोको। तो कह रहे प्रभु जी मेरे को दिक्कत आ रही है। मैं फिर महाराज के पास गया, मैंने कहा महाराज आई स्पोक टू कवि श्रेष्ठ को आप जानते होंगे 9.5 साल इन्होंने महाराज की सेवा की। तो मैंने बोला महाराज आई स्पोक टू कवि श्रेष्ठ, he will not misbehave with you, but he is requesting that you should not eat all this stuff, it is not good for your health, otherwise he has told me that we will complain to his own Gopal Krishna Maharaj that you are not following the doctor's restrictions। बोले no I will not eat महाप्रसाद। तो ऐसे जो है, तो महाराज को अगर मुझे कभी कुछ बात कहनी होती थी तो या तो मैं स्पष्ट कहता, एक बार और कई बार ऐसे हुआ तो महाराज मुझे बोलते थे, मैंने बोला महाराज बहुत पुश करते थे, आप ये करो आप वो करो। मैंने बोला महाराज मैं इतनी फास्ट नहीं कर सकता, या समटाइम्स वेरी डिमांडिंग। और कभी कभी बोलते इंडिया हैपन्स लाइक दिस। एक बार मैंने भी सरकास्टिकली बोल दिया, हाँ दिस इज इंडिया, थिंग्स विल हैपन लाइक दिस ओनली। व्हाट डिड यू से टू मी?
मैं कहा महाराज आई एम सेइंग दिस इज इंडिया यू नो, एंड क्योंकि इंडिया इज सो अनऑर्गेनाइज इन वेरियस एस्पेक्ट्स। लेकिन मैंने महाराज से बहुत चीज़ों के प्रोफेशनलिज्म सीखा। और महाराज की लास्ट और अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि महाराज बहुत ही सरल थे, बहुत ही सरल थे। कम से कम 5-7 बारी मैंने उनको किसी ना किसी बात पे फीडबैक देना पड़ा कि महाराज टेम्पल में ये होना बड़ा मुश्किल है, आप ओवर डिमांड कर रहे हो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो वो डिस्कशन जरूर करते थे, लेकिन बट एंड में पूरा सबमिट कर जाते थे। ही हैड नो इंडिपेंडेंट एजेंडा। वो चाहते थे भक्तों के लिए स्कूल हो, बीमार भक्तों के लिए फैसिलिटी हो, डीटीज की सेवा बहुत अच्छी हो। और मेरे लिए बड़ा द्वंद्व था। मैं जब डीटी डिपार्टमेंट में सेवा करने के लिए गया तो महाराज बड़े खुश हुए, मुरली कृष्ण दिस इज वेरी गुड, नाउ यू विल मेक इंटरनल डेवलपमेंट यू नो लाइक दैट, एंड यू शुड सर्व द डीटीज, एंड बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते थे। और गोपाल कृष्ण महाराज आते थे, महाराज कहते थे व्हाई आर यू सर्विंग डीटीज, यू शुड गो आउट एंड प्रीच। तो मैं द्वंद्व में फंस जाता था। एनी हाउ, तो महाराज से, और महाराज रोज कई बार जब बड़े खुश होते थे जब वो डीटीज को दर्शनार्थी में मिरर दर्पण दर्शन कराया करते थे मिरर के अंदर। और जनरली महाराज बहुत खुश होते थे, राधा रानी के हाथ में फूल दिया करते थे। वो इज टू कम एंड सो इज वेरी हैप्पी कि सेवा। उसके बाद ही वो ऊपर जाया करते, फिर प्रभुपाद जी को फ्लावर चढ़ा के और फिर 7:45-8 बजे करीब रूम में जाया करते थे। सो आई थिंक ISKCON पंजाबी बाग इज हाईली ब्लेस्ड। इस तरह गोपाल कृष्ण महाराज जब भी उनका व्यास पूजा होता था या इन जनरल भी हम कभी भी मिलने जाते थे, महाराज इज ओके, अभी कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, एंड इज ही प्रीचिंग, हाउ इज हिज हेल्थ। और जब भी महाराज उनको भी फोन करके भी कहीं पूछेंगे या मिलेंगे, आप पंजाबी बाग डिवोटी टेकिंग गुड केयर ऑफ यू। तो गोपाल कृष्ण महाराज भी बहुत उनका सत्कार किया करते थे, प्रेम भी करते थे। और हमें महाराज कहते थे ही इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, महाराज इज वेरी सिंपल, ही इज फुली सरेंडर टू श्रील प्रभुपाद। और महाराज इतने सिंपल थे इसलिए उनके प्रति अपराध करना थोड़ा मतलब ऐसा फेमिलियरिटी बहुत आसान आ जाता था। और महाराज कहते थे इज वेरी सिंपल एंड वेरी फायर्ड अप प्रीचर। और महाराज से पूछते थे तो कभी कभी महाराज अच्छे मूड में होते थे, बोलते यस डिवोट्स आर टेकिंग मी वेरी केयर ऑफ मी वेरी नाइसली। सम टाइम ही वुड से नो नो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। वो हमारे सामने ही हमें बोल देते थे, बिल्कुल महाराज को बोल देते थे। यानी ये बहुत सिंपल थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन दूसरे की बात सुनते भी बहुत थे। एंड ही वाज वेरी वेरी केयरिंग। तो वी लॉस्ट अ फादरली शेल्टर। ऑफ कोर्स महाराज को काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे। और कोविड के दौरान में जब वहाँ राजीव गांधी में उनका ऑपरेशन हुआ था, देन ही वाज इन ICU। और फिर हम में से बहुत सारे भक्त उस दौरान क्वारंटीन के अंदर कोविड में थे। तो जब मैं निकल गया कोविड से, क्वारंटीन से, तो फिर 3-1 दिन लगभग मैं ICU में था। फाइनली वी टुक द कॉल डॉक्टर से सब डिस्कस करके पैनल से, और लगभग डॉक्टर्स ने बोला था कि चांसेस मुश्किल हैं बट डोंट कीप हिम इन ICU। तो फिर हम मंदिर में वापस लेके आए और 14 नवंबर 2020 समवेयर अराउंड 5:50 और 6 बजे के बीच में महाराज लेफ्ट दिस वर्ल्ड। और कार्तिक का महीना था, दीपावली थी उस दिन, उस दिन मतलब वही चतुर्दशी थी और शाम दीपावली, इस प्रकार से जैसे इस बार ही डिफरेंस है तिथि का वैसे ही था। और प्रभुपाद जी के तिरुभाव तिथि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उस दिन महाराज ने देह त्याग किया था। सो वील रिमेन फॉर एवर ग्रेटफुल। और महाराज को याद करना हो तो आप ये शालिग्राम शिला के दर्शन कर सकते हैं। एंड वो महाराज के द्वारा सेवित सब शालिग्राम से। जय परम पूजनीय भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। तो अभी हम पुष्पांजलि करेंगे और पुष्पांजलि के बाद फिर आरती करेंगे। और उसके बाद में हाँ उठ जाएंगे भक्तों। 2 व्यवस्था है। तो जो महाप्रसाद महाराज को भोग लगाया वो तो ऊपर रहेगा, लेकिन बाहर हमने व्यवस्था की है, एक प्रभु जी के लिए, एक माता जी के लिए, कि जो महाराज के कुछ यूज्ड पैराफर्नेलिया थे, तो उसमें से महाराज के 2 पादुका थे, स्लीपर्स थे। तो प्रभु जी लोग कहाँ पे अरेंज किया? हाँ, तो बाहर की तरफ अरेंज किया है। तो माता जी भी जाते हुए उसको स्पर्श कर सकते हैं एक लाइन में, और एक में प्रभु जी भी कर सकते हैं। अगर आपको बीच में जाना तो अभी भी रेडी है ना? हाँ, तो आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप में बीच में से किन्हीं को देरी हो रही हो ऑफिस से जाने के लिए, तो आप उनके आशीर्वाद लेके जा सकते हैं। और आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए महाराज से कि हमें भी ISKCON अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारी निष्ठा हो, वो गड़बड़ाए ना।
प्रभुपाद जी के जाने के बाद हमारी संस्था में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे और वो समय पे प्रभुपाद डिसाइपल्स को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था। जैसे अभी कई बड़े विचलित होते हैं, कुछ कुछ बुरी खबर मिलती है इस्कॉन की ये वो, पर अभी मैं हमारे लीडरशिप कोर्स के अंदर बताया था 1986 के अंदर और उस एरा के अंदर जो समस्या 1986 और 1990 के बीच में, उससे पहले आना शुरू हुई थी, तो जो समस्याएं थी उसका तो अभी वर्तमान के अंदर 5% समस्या भी नहीं है ना। तो लेकिन उसमें सरवाइव कर पाना, महाराज भी कभी कभी बताते थे इट वॉज अ वेरी टफ टाइम। तो उस समय को सरवाइव करना और उसमें एंथुजियास्टिक रहना, प्रचार की भावना को मेंटेन रखना, पुस्तक वितरण की भावना को मेंटेन रखना, उत्साह को मेंटेन रखना, तो वो हमारी निष्ठा को चेक करता है। तो हम महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी सरलता, वैष्णव के गुण, श्री विग्रह के प्रति प्रेम और वैष्णव के प्रति प्रेम का भाव और साथ साथ जो है प्रभुपाद के प्रति निष्ठा हमें प्राप्त हो। जय श्री भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हम पुष्पांजलि करेंगे। प्रभु जी लोग उस तरफ जा सकते हैं, माता जी लोग इस तरफ आ सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हमारे पीछे आप मंत्र दोहराइएगा और बाद में 3 बारी हम पुष्पांजलि ऑफर करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव
भूमेस्त्वं निरदेष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सूरतौ पंगोः मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् बृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभे वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिः गोपीनाथः श्रियेस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी 3 बारी हम जब पुष्पांजलि करेंगे तो आप कृपया फेंकिएगा मत, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में इस फूलों को 3 बारी करके बाद में हमारे भक्त लोग इकट्ठा करके एक साथ ऑफर कर देंगे, या आप अंत में आरती के बाद में आके भी ऑफर कर सकते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामिन् इति नामिने एषा पुष्पांजलि। जय श्रीमद् भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामिन् इति नामिने शा पुष्पांजलि समर्पयामि। जय श्रीमद् भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामिन् इति नामिने शा पुष्पांजलि समर्पयामि। भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की। भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी चतुर्थिभाव महोत्सव की। गौर प्रेमानंदे हरि। तो अभी आरती करेंगे।
जयो राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम। संसार दावानल लीलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। संसार दावानल लीलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। प्रापस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। प्रापस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमादन् मनसुरसेना। प्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमादन् मनसुरसेना। रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। श्री विग्रहाराधन नित्यनाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो। श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो। युक्तस्य भक्ताश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वादाना तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान्। चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वादन तृप्तान् हरिभक्त संग। कृतदेव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। ओ श्री राधिका माधवयोरपारो माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना। राधिका माधवयोरपारो माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना। प्रतीक्षणा स्वातन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। प्रतीक्षणा स्वातन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। निकुञ्जयूनो रतिकिलिसीधे यायालिभियुक्तिरपेक्षणीया। निकुञ्जयो नो रतिकलिसीधे यायालिभिरुक्तिरपेक्षणीया। ओ तत्राधिदक्षात् भक्तिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। विदाक्षाति वल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दा। साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे
उक्तस्तथा भायत एव सद्वि दक्षधरी तेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा एव सद्वि किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु चरणारविन्दा किन्तु प्रभुया प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादा भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि यस्य प्रसाद भगवत् प्रसादो यस्य प्रसाद नगनिकतो ध्यायन्तु वंशस्य यस्य त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरु चरणारविन्दम् ध्यायन्तु वंशस्य यस्य त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल ओ हरे कृष्ण नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामिने ते नामिने आधे लेडीज नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज होलिनेस भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ISKCON फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हिज होलिनेस भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। हिज होलिनेस भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories assembled Hare Krishna. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaurang. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Lord.